So please make a comment that intention. So please make this comment. Intentional efforts are required to learn idioms because it is not possible naturally. So can you make this comment? Intentional efforts are required to learn idioms because it is not possible naturally. Thank you, Imran Khan, for your first comment. Intentional efforts are required to learn idioms because it is not possible naturally. So can you tell me what are other areas which are not possible naturally? Can you tell me what are the other areas which are not possible naturally? So intentional efforts are required to learn idioms because learning idioms is not possible naturally. Learning is singular, so learning is not possible, not are. So what are the other areas? Idioms, it is not possible to learn it naturally. So what are the other areas? Not a new skill. Yesterday I told you the other areas. कल मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें जो है बंदा कुदरती तौर पर नहीं सीख सकता, उसके लिए इरादतन कसदन कोशिश की जरूरत होती है. Did you learn your language with intentional efforts? No. Did you learn your mother tongue? As Imad Khan has written, yes. मतलब आपकी जो मादरी जबान है वो आपने किसी कोशिश के बगैर सीखी है. ठीक है, आपने बगैर किसी कोशिश के अपनी मादरी जबान सीखी है. तो जबान में और कौन से एरियाज है जिसको आप कुदरती तौर पर आसानी से नहीं सीखोगे? idioms, phrasal verbs, accent, proverbs, prepositions. ये कल मैंने आपको बताए थे कि भाई ये ऐसे एरियाज है जिसको आपने स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ते हैं. नेचुरली इट इज नॉट पॉसिबल. मतलब ये आसानी से नहीं होगा. आप कहते हैं कि बस मैं पढ़ूंगा हो जाएगा, नहीं. Because this is the characteristic of native speakers. The characteristic of native speakers. ये सिर्फ जो नेटिव स्पीकर्स है जिनका मदर टंग है वो ही सीख सकते हैं. So idioms is also one of those areas where your special efforts are required to learn it. वो स्पेशल एफर्ट्स क्या होते हैं? What are the intentional efforts? इंटेंशन ये है कि आप बाकायदा नियत बांधते हैं, आप एक कसदन एक चीज करते हैं, कसद करते हैं, इरादा करते हैं. So fake it and make it. Learning in context or learning in isolation. जो तरीक़ाकार फ्रेजल वर्ब्स का है, जो तरीक़ाकार प्रीपोजिशंस का है या एडवांस वोकैबुलरी का है, वही चीज आपको idioms के लिए भी करना होगा. As yesterday we did it for phrasal verbs, so the same is for idioms.
तो आपके पास 24 घंटे थे, तो आपने फ्रेजल वर्ब्स का कुछ ना कुछ किया होगा, नोट्स पढ़े होंगे. आज मैंने आपको सुबह idioms के नोट्स दिए, एंड आई यूज्ड idioms इन कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट, सियाको सबाक. मैंने आपके लिए 20 idioms यूज किए हैं पैराग्राफ में, फिर मैंने 10 idioms यूज किए हैं पैराग्राफ में, और ऊपर जो आपको ये क्लास का नजर आ रहा है टाइटल, उसमें भी 5 idioms मैंने यूज किए हैं. सो यू क्रिएट अ सिचुएशन एंड देयर यू यूज idioms एंड यू डू इट फॉर 1 month 2 months. अब 1 महीना 2 महीने जो है सिर्फ idioms लिखते हैं, बार बार लिखते हैं, बार बार पढ़ते हैं. सो देन यू लर्न इट. दिस इज कॉल्ड इंटेंशनल एफर्ट. बाकायदा इरादे के साथ आप ये एफर्ट करते हैं. सो आई हैव गिवन यू, लेट मी स्पिल द बीन्स. लेट मी स्पिल द बीन्स. इसका क्या मतलब है? लेट मी ओपन द सीक्रेट. राज खोलना, तो उसको क्या कहते हैं? टू स्पिल द बीन्स. ब्रेक अ लेग मीन्स good luck. Call it a day means to finish. So let us make idioms a piece of cake. Now the definition of idiom is that you don't take the literal meaning, you take the metaphorical meaning like phrasal verbs. Phrasal verbs में भी हम लफ्जी माना नहीं लेते, हम उसका बामहाविरा माना लेते हैं. So similarly in idioms we also take metaphorical meaning, or we take the idiomatic meaning. तो ओपन सीक्रेट के लिए क्या है? स्पिल द बीन्स. SPILLBEANS, स्पिल द बीन्स. अब कम से कम जो मेरा टॉपिक होता है ना, उसको पढ़ा करें. मैं आपके लिए बड़ा मेहनत से टॉपिक बनाता हूँ, नोट्स बनाता हूँ. सो दिस इज हाईली एसेंशियल दैट यू रीड द नोट्स और यू रीड द टॉपिक, कि आज हमारा क्या टॉपिक है. ऐसा मुंह उठा के क्लास में मत बैठा करे, थोड़ा सा पहले से पढ़ा करे कि टॉपिक क्या है. टॉपिक लंबा इसलिए होता है ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए, थोड़ा सा आपको टेक्स्ट में, राइटिंग में भी कोई चीज नजर आ जाए, और उसी टॉपिक को फिर हम क्लास में डिटेल में डिस्कस करते हैं. एंड बिफोर दैट आई गिव यू notes also. So let's make idioms a piece of cake. इसको हम आसान करें. Let me spill the beans. Let me open the secret. Break a leg. Good luck. And then we call it a day. और फिर हम इसको डे कहते हैं. तो इमाद खान को देखो ना, कितने ज्यादा उसने जो है ना idioms आपको बता रहा है. It is all Greek to me. कुछ समझ नहीं आती. I don't understand at all. तो आपने इसको क्या करना है? आपको इसको जब idiom में बोलते हैं तो आप कहते हैं it is all Greek to me. तो ये क्या है? ये idiom है. idiom ये है कि हम लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते, हम उसकी जगह कोई idiom जो है वो इस्तेमाल करते हैं. So you might have read the notes where I have given you a lot of idioms, and I have used those idioms in context. I have made paragraphs so that you can read it in an interesting way, and how you can use idioms. So as yesterday I told you about about phrasal verbs.
that you can use it in context. So similarly, today we are using some of the idioms in the context. So how many idioms you remember? Do you remember some of the idioms? There is some internet problem, so I hope I am audible and visible. If I am audible and visible, so please tell me so that I can continue. Okay. I remember a few idioms, very few, a few idioms. That is, explode is not idiom. Explode is a word. Explode is a common word. That is not an idiom. So what I will do, I will tell you from the notes that I have given. So anybody can tell me the first paragraph. Can you copy paste from the notes so that we go through the notes? Can you tell me about the notes that I have given you, the first paragraph where I have used 5 idioms? So can you copy paste? क्या आप नोट्स में जा सकते हैं? वहाँ से जो पहला एक पैराग्राफ है जिसमें मैंने 5 idioms यूज़ किए हैं. So can you please do that so that we can do the practice. Now we create a kind of scenario, and in that scenario we use different idioms. So this is our exercise. So you can read the notes and then you create a scenario where you can use some of the idioms. Yes. So these are the notes. An idiom is a phrase or expression that has a figurative meaning that is different from the literal meaning of the individual words. जो individual words है, जो एक एक लफ्ज़ है अलग-अलग, उससे इसका meaning जो है वो figurative होता है. For example, the idiom kick the bucket literally means to kick a bucket, but it figuratively means to die. अब आप देखते हैं टू किक द बकेट. बकेट जो है वो ऐसा बर्तन सा होता है जिसमें लोग पानी निकालते हैं. तो बकेट, किक द बकेट मीन्स कि बकेट को किक लगाना. लेकिन ये इसका लिटरल मीनिंग हम नहीं लेते, इसका लफ्जी माना हम नहीं लेते. इसका मतलब क्या है? टू डाई, मर जाना. Here are some other examples of idioms. It is raining cats and dogs. It means it is raining very heavily. It's all Greek to me. This means I don't understand something. The early bird gets the worm. This means that people who are first to do something, they get the success. Now, can you make a paragraph by using these idioms that I have given you the examples? So can you make a paragraph with these idioms?
अब मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या पैराग्राफ बनाता? बिफोर आई किक द बकेट, इससे पहले कि मैं मर जाऊं. बिफोर आई किक द bucket, I want to do something great and nothing should be all Greek to me. I will get up in the morning and I will, like a early bird, I will get up early because early bird, when we get up, the early bird gets the worm, so I will also get up and to get success in my life. I will become practical because a bird in the hand is worth two in the bush. So like this you have to make now a paragraph. This is your exercise. अब किसी भी टॉपिक पे, माई स्कूल, माई एम्बिशन, माई लाइफ, माई टीचर, ग्लोबल वार्मिंग, तो ये जो इडियम्स आपके सामने है, इनमें से आप इस्तेमाल करके एक पैराग्राफ बनाएं. दैट इज योर टास्क एंड लेट मी चेक इट. आपके पास नोट्स में और आज के टाइटल में, जो क्लास का टाइटल है, बहुत ज़्यादा इडियम्स यूज हो गई है. तो इन इडियम्स को देखो और कोई सिनेरियो बनाओ, कोई मंजर बनाओ किसी भी टॉपिक पे और इडियम यूज करो. सो दिस विल बी आल्सो योर ग्रामर प्रैक्टिस, कि आप इडियम्स को सही इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं. Write a paragraph, 2, 3, 4 sentences. As Imran Khan has written, global warming is like the sword of Damocles. Before it makes the earth a ghost planet, we must take initiatives. Now, इमरान खान, आप CSS के स्टूडेंट हैं तो आप एकेडमिक राइटिंग आपको करना होगा. एकेडमिक राइटिंग का जो पहली बात है वो ये है कि आप प्रोनाउंस यूज नहीं करते. ये वी, आई, यू, दे, ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. आज आप कम से कम इस आदत से जान छुड़ाओ कि मैंने प्रोनाउंस नहीं यूज करने. सो ग्लोबल वार्मिंग इज लाइक द वर्ड स्वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी. बिफोर इट मेक्स द अर्थ अ गोस्ट प्लेनेट, इनिशिएटिव मस्ट बी टेकन. तो ये एकेडमिक हो गया क्योंकि हमने पैसिव वॉइस यूज किया. मैंने आपको पैसिव वॉइस के लेक्चर में बताया था कि आपने एकेडमिक राइटिंग में पैसिव वॉइस यूज करने हैं. जब आप प्रोनाउन निकालते हैं, सब्जेक्ट निकल जाता है, तो एक्टिव वॉइस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है. सो प्लीज री राइट इट. एनी अदर पर्सन? अब मैंने इतनी ज़्यादा इडियम्स आपको दी है, 100 से ज़्यादा इडियम दी है. तो प्लीज यूज मोर इडियम्स. थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, सिर्फ मेरे सुनने से नहीं होगा. I got up in the morning and it was raining cats and dogs, which was once in a blue moon for me. Once in a blue moon, once in a while. Yes, correct. बिल्कुल ठीक है.
नेक्स्ट, एलान मस्क। अब याह्या खान, मैं आपके हाथ पाँव पकड़ता हूं कि प्रॉपर नाउन को प्रॉपर तरीके से लिखो। आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मस्क जो है ये प्रॉपर नाउन है, तो इसका एम कैपिटल होगा। इज द रिचेस्ट पर्सन। अब देखो ना, एक एक सेंटेंस में कितनी गलतियां हैं। जो सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव के, द बेस्ट, तो उसके साथ द लगता है, ए नहीं लगता। वो ए हो नहीं सकता ना। सबसे बेहतरीन जो होता है वो एक होता है, मखसूस होता है, तो उसके साथ आपने द लगाना है। फिर रिचेस्ट का स्पेलिंग जो है वो RICH है। रिचेस्ट RICH। रीच और चीज है, रिच और चीज है। आप लोगों का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सो एलन मस्क इज द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड अबव ऑल एल्स। अब इसमें कौन सा ईडियम है? तो टास्क ये है कि आप ईडियम यूज करें, क्योंकि हम ईडियम्स की क्लास में बैठे हैं, क्योंकि मैंने आपको ईडियम्स के नोट्स दिए हैं, क्योंकि मैंने सुबह आपको ईडियम्स का टॉपिक दिया है, क्योंकि आज हम ईडियम्स के क्लासरूम में बैठे हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ईडियम्स का कर रही है। अबव ऑल हो सकता है इसमें ईडियम है, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब टाइप चीज है। above all else, he is CEO। CEO को आपने कैपिटल लिखना है, स्मॉल नहीं लिखना। CEO को कैपिटल लिखना है, बिकॉज ही इज। अब इंसान के लिए हम इट यूज नहीं करते, हम ही शी यूज करते हैं, बिकॉज ही इज CEO ऑफ मेनी कंपनीज। बाकी ठीक है, गुड। सारे लोग करें, थोड़ा सा ईडियम यूज करें ना। आपके सामने ईडियम लिखी गई है। या वैसे गूगल से ले लो कि किताब खोलो, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश में 4 चैप्टर्स है ईडियम्स के, 4-5 चैप्टर्स है, उधर से ले लो अगर आपको याद नहीं है। क्योंकि मैं बोलता हूं, लेकिन आप लोगों का फिर ये हाल है कि आपके राइटिंग जो है बहुत लूज है, बहुत ढीला है। नेक्स्ट प्लीज लिखे, कुछ ना कुछ लिखे यार। मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे, बस यही काम है हमारा सारा दिन। एक दो लोग लगे हुए, बस वो बार बार कर रहे हैं। 10-15 लोग लाइव है। आई एम ब्लू टुडे इज आई डिडंट पास द एग्जाम विच वॉज ऑल ग्रीक टू मी। बिल्कुल ठीक है। ब्लूज प्लूरल में ज्यादा यूज होता है व्हेन समवन इज सैड, सो वी यूज द वर्ड ब्लूज प्लूरल में। अब याह्या खान के मैंने हाथ पांव जोड़ के कहा कि मस्क को कैपिटल लिखो, लेकिन वो फिर भी एम जो है वो सिंगुलर है। वो है अपना स्मॉल है। आई प्लान टू गो फॉर अटेंडिंग ट्यूशन क्लास बट इट वॉज रेनिंग। अब ये रेनिंग कैट्स एंड डॉग से भी आगे निकलो ना। कोई नई भी बताओ, कोई नया ईडियम यूज करो यार। 50, 70, 80 ईडियम्स आज मैंने आप लोगों को दिए हैं नोट्स में। अब सारे लोग वो कैट्स एंड डॉग्स के पीछे पड़े। Moreover, yesterday philosophy class was important because it is all Greek to me. वही all Greek to me, वही cats and dogs।
या खान, आपको मेरी समझ नहीं आ रही, मैं उर्दू में बोल रहा हूं कि ईडियम यूज करो। अब इसमें कौन सा ईडियम है? द पुलिस डिसाइड, द पुलिस डिसाइड या पुलिस डिसाइडेड? फैसला करते हैं या फैसला किया? टू एक्ट ऑन द एनोनिमस कॉल दे रिसीव्ड। ईडियम की जरा इसमें क्लास हमारे ईडियम का है। देयर इज नीड टू कीप एन आई ऑन द बॉल एंड नॉट टू स्पिल द बीन्स, प्लूरल में है। ईडियम जिस तरह होता है उसी तरह आपने उसको यूज करना है। नॉट टू स्पिल द बीन्स, प्लूरल में है। बिफोर अचीविंग सक्सेस इन CSS एग्जाम, CSS एक एग्जाम है तो प्लूरल आप कैसे लिखते हैं? CSS एग्जाम, एग्जाम्स नहीं है। एंड ऑलवेज डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। हाँ बाकी ठीक है रहमान, लेकिन राइटिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट किया करे, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बिरवाई कैट्स एंड डॉग्स, शहजाद खान। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स एंड आई वॉज स्ट्रेस्ड आउट। आई कैपिटल लिखते हैं, स्मॉल नहीं लिखते। सो आई क्रॉल बैक इन टू बेड। क्रॉल्ड, क्योंकि आप माजी की बात कर रही है यार, एक्ट अपॉन होता है, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब है, ये ईडियम नहीं है। ये कल के क्लास की बात है, आज हम ईडियम्स की बातें कर रहे हैं जिसमें फ्रेजल वर्ब्स नहीं है। मैंने आपको नोट्स में आप 100 से ज्यादा ईडियम्स दिए हैं, 100 से ज्यादा ईडियम्स, तो उसमें से कोई ईडियम यूज करो। डू नॉट लूज हार्ट, इट इज नॉट अ ग्लूम एंड डूम सिचुएशन, एवरीथिंग विल बी फाइन। सून, ओके करेक्ट। अच्छा मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये जो आज मैंने नोट्स दिए हैं ना उसको जरा खोल दे, उसमें से 4-5 ईडियम्स लिखे। अब उन ईडियम्स को फिर इस्तेमाल करें यहां किसी भी टॉपिक में, ये मैं आपको कह रहा हूं। कोई मुश्किल काम कह रहा हूं आपको? After the first innings of the match between Pakistan and Afghanistan, Afghanistan was very happy because they, अब ये देखो ना, असद जट साहब, इतना तो बनने में कॉमन सेंस होता है कि दरमियान में डोंट का डी कैसे कैपिटल आ गया। बंदा कैसे इतना केयरलेस हो सकता है, इतना बेएहतियात कैसे हो सकता है? मुझे इधर से नजर आ रहा है और आप खुद लिख रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा। फिर आप कह रहे दे डोंट काउंट योर चिकन्स, तो क्या अफगानिस्तान वाले हमारे चिकन काउंट करते हैं? जब आपने दे लिखा तो फिर देयर लिखो। लेकिन बहुत कम, रॉकेट साइंस, कोई चांद पे हम जा रहे हैं सारे लोग, या कोई बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं। आप लोगों का लेवल कब हाई हो जाएगा? नोट्स को आप पढ़ते नहीं है, सही नहीं पढ़ते। सो पाकिस्तान मेंटेलिटी ये है कि जी आराम से जाओ, कुर्सी पे बैठो, टीचर बोलेगा, गला पाड़ेगा, बस कुछ समझ आ गई तो आ गई। नहीं, मैंने खुद कुछ नहीं करना। बिकॉज दे डोंट काउंट देयर चिकन्स बिफोर दे हैच। देयर, योर नहीं। अब देखो ना शहजाद खान, आई वॉज इन फ्रंट ऑफ गन, तो इन का आई कैपिटल है। इन फ्रंट जो है ये 2 वर्ड्स है, ये एक वर्ड नहीं है। कल आप लोगों ने ऐसे कि पेपर में 30 पैराग्राफ लिखने हैं और यहां हम 2-2, 3-3 लाइन लिख रहे हैं, और ये हमारा हाल है। थोड़ा सा रियलिटी डोज लेना चाहिए कि यार मैं किस हालत में हूं, मेरा क्या हाल है। I was in front of the gun, so I in small, I small, front or in में space. He was trying to hit me, but I did not want to kick the bucket. But I did not want to kick the bucket yet. So
आई, तो मैं भाग गया, मतलब बात पूरी है. देन आई रैन अवे. हाँ जी. अच्छा, अभी हम ओपा जो है इस पे यूज करते हैं कि किस तरह हमें आपको इडियम्स आते हैं या नहीं आते. कम से कम आपको मीनिंग आना, फिर उसको इस्तेमाल करना. ठीक है. हारिस जमियाली. Political instability in Pakistan has been a continuous phenomenon like casting a perpetual shadow on the nation's development. ठीक है. अच्छा, मैं आपको इडियम बताता हूं और आप लोगों ने मुझे कहना है कि ये यू है अननोन, पी है पैसिव है, आप उसको जानते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करते, और यू का मतलब है अननोन, आपने पहले दफ़ा सुना है, या ए का मतलब है एक्टिव, कि हाँ आप इसको जानते हैं कैट्स एंड डॉग्स की तरह और आप इसको इस्तेमाल करते हैं. अंडर द वेदर, कोई तेज बंदा है तो उसको लिखा करे अंडर द वेदर. अब शहजाद खान में 50 दफा कहा आपको कि आई कैपिटल लिखा करो, स्मॉल मत लिखा करो. आप क्लास में बैठे हैं, ये कोई चैटिंग हम नहीं कर रहे. आई वर फीलिंग गुड, अब ये कौन सी अंग्रेजी है. आई वॉज फीलिंग गुड. मतलब टेंशन में आके आप लोगों को बेसिक्स भी भूल जाते हैं. कि आई वॉज फीलिंग होता है या आई वर फीलिंग होता है. ये टेंशन में है ना कि भाई नईम खान सामने बैठा है, टीचर है, क्लास है, लोग देख रहे हैं हमें. तो अंडर द वेदर जो है, फीलिंग एल, बीमार महसूस होना, उसको कहते हैं अंडर द वेदर. शी वॉज फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर एंड दैट्स वाई शी वेंट टू डॉक्टर. तो अंडर द वेदर का क्या मतलब है, बीमार होना. नेक्स्ट, कोल्ड फीट. कोल्ड फीट ईडियम लिखो और इसके साथ ये लिखो, कोल्ड फीट. ठंडे पाव, कोल्ड फीट. ये यू है अननोन है, पी पैसिव, ए एक्टिव. तो कोल्ड फीट मीन्स बिकमिंग नर्वस, नर्वस हो जाना. Today the students were getting cold feet because they were unable to use idioms. Getting cold feet, becoming nervous. Nervous हो जाना, जिसको हम कहते हैं ना पाँव ठंडे हो जाना. Cold feet. Okay. Snowed under. Snow, बर्फ, SNOWED, snowed under. Snowed under. बर्फ के अंदर नीचे होना. सो इट मीन्स टू बी बिजी, बिजी होना, मसरूफ होना. माई टीचर सीम्स टू हैव बीन स्नोड अंडर द लास्ट फ्यू वीक्स. माई टीचर सीम्स टू हैव बीन snowed under for the last few weeks.
अच्छा, walk on eggshells, HELLS, walk on eggs, अंडे, hells, HELLS. So walk on eggs hills मतलब अंडे के दोज़खों पे वॉक करना, सिरात मुस्तकीम क्या कहते हैं उसको, पुल सिरात पे जाना, जिसका मतलब क्या है, टू बी वेरी केयरफुल with your actions and words. You have to walk on eggshells if you are preparing for CSS. Bite the bullet, BITE, bite the bullet. बुलेट जो है गोली को बाइट करना, खाना या चुबाना, बाइट. बाइट द बुलेट. Finish something no matter how unsatisfying or unpleasant it is. Get something over with. जान छुड़ाना, ख़त्म करना, आपको अच्छा लगे बुरा लगे. I have to bite the bullet of learning idioms whether I like it or I don't like it because it is part of the compulsory exam. तो आपको एक चीज़ पसंद है या ना पसंद है, लेकिन इसको करना, फिनिश करना, ख़त्म करना. तो इसको क्या कहते हैं, बाइट द बुलेट. Pretty penny, pretty penny, PRETTY, pretty penny, pretty penny. So pretty penny means expensive. The dress she wants for her birthday will cost a pretty penny, PENNY. बहुत महंगी चीज होना, तो उसको क्या कहते हैं, pretty penny. The dress is a pretty penny. ड्रेस जो है बहुत महंगी है, a pretty penny. So the last one for exercise, that is cut corners. Cut corners, PENNY. Penny नहीं होता, penny पैसा, penny wise pound foolish. ये भी एक proverb है.